welcome to day 7 of the 11th edition of Asian Aquatic Championship 2025 and we are here at the Veer Savarkar Stadium in Ahmedabad and जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो अगला इवेंट है आज का वो शुरू होने वाला है। हमने पिछले 3 दिनों से देखा है कि क्या बेहतरीन परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हुई है आर्टिस्टिक स्विमिंग में पर्टिकुलरली। तो आर्टिस्टिक स्विमिंग अभी यहाँ पर शुरू होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ पर आर्टिस्टिक स्विमिंग में आप देखेंगे सोलो मेन एंड फीमेल फ्री एंड ऑल्सो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिक्सचर डुएट होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स हमने कल देखा है कि थाईलैंड एंड कजाकिस्तान ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी थी, बट इसके बारे में और जानकारी हमें देंगे मेरे दोस्त अर्जुन। कल हमने बेहतरीन मिक्सचर्स देखे हैं ऑफ टेक्निकल एंड वी ऑल्सो सीन के सम रियली गुड performances by the team. So how do you think it's going to turn out today? Well, it's going to be very interesting and you did mention Kazakhstan. वो एक टॉप टीम है। पहले दिन में सोलो इवेंट्स हमें देखने को मिली है जो टेक्निकल पे थे, आज वो फ्री होगा और टेक्निकल साइड में जो 3 मेडल डे 1 कजाकिस्तान जीत गया, डे 4 में टीम इवेंट में कजाकिस्तान ने चौथा मेडल जीता और हमने उनसे बात भी की। आज होगा विमेन सोलो, मेन सोलो और उसके साथ मिक्स ड्यूएट ऑल्सो। और यहाँ पे तो रिकी मार्टिन का भी वीडियो चल रहा था। ये आपके रूटीन्स हैं, 2 मिनट 20 सेकंड से 2 मिनट 50 सेकंड का एक रूटीन होता है। उस रूटीन में एक म्यूजिकल स्कोर चलता है जिसको इंटरप्रेट करना पड़ता है अपने म्यूजिकल परफॉर्मेंस में जो प्रदर्शन है। और यहाँ पे अलग अलग जो आपके टॉप सिंगर्स हैं उनके गाने चलते हैं और उस बेसिस पे आपको जो है सारे 7, 8, 9 एलिमेंट्स आपको परफॉर्म करने, उसके साथ आर्टिस्टिक इंप्रेशन भी दिखाना है, तब जाके आपका स्कोर बनता है। और हर एलिमेंट के साथ एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी है। एब्सोल्युटली अर्जुन, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर म्यूजिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स आई मीन कोरियोग्राफी की जब बात करते हैं हम तो म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो हेंस यहाँ पर जो म्यूजिकल एलिमेंट है इन द परफॉर्मेंसेस इज अमेजिंग अर्जुन। एंड जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं कि इनका जो बैले एंड जिम्नासियम का जो पूरा टेक्निकलिटी है इनमें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अंडर वाटर जब आप जाते हैं तो स्पेशली म्यूज़िक जो है आपको सुनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए द काइंड ऑफ प्रैक्टिस ये लेकर आते हैं ये म्यूजिक के साथ साथ, क्योंकि जजेस ये भी देख रहे हैं कि आप अंडर वाटर बिना म्यूजिक सुने आपने काउंट पे कैसे ये सिंक्रो किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड रिकी मार्टिन की बात आपने कह दी तो रिकी मार्टिन वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट। मुझे उनके गाने बहुत पसंद है, बचपन से ही मैं उनके गाने सुनते हुए आ रही हूँ, तो मैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड में हूँ आज। बहुत मज़ा आने वाला है ये एंटायर परफॉर्मेंसेस देखने। एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे आपके ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कंटिन्यूस स्पिन्स हैं, जैसे 720 डिग्री वो आपके 2 स्पिन हुए। अगर आपने 1080 डिग्री पे 3 स्पिन होते हैं, ये कुछ टेक्निकल साइड होती हैं जो कोच कार्ड में मेंशन होती है। आपने सिंक्रो एरर की बात की, सिंक्रोनाइज होना चाहिए क्योंकि मिक्स ड्यूएट भी है जैसे आपने बताया, बट सोलो में ऐसा नहीं है। और विमेन सोलो, मेन सोलो में अपने अपने एलिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और अंडर वाटर का जो दृश्य है वो तब पता चलता है जब कैमरा ऑन होता है और वहाँ पे जैसे शॉर्ट फिश है, आपके फिश टेल है, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि डाइवर सबमर्ज्ड होता है। वहाँ पे एक आधा हिस्सा पानी के नीचे और दूसरा हिस्सा जो होता है इट्स इन दी एयर। इट्स अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस एज फार एज आर्टिस्टिक स्विमिंग इज कंसर्न। यहाँ पे जो ड्यूअल साइड है, वन इन दी एयर एंड द अदर अंडर वाटर, दिस इज व्हाट वी सी ऑन दूरदर्शन स्पोर्ट्स। और जो तमाम जो हमारे प्रतियोगी हैं उनका पूरा जो एफर्ट यही होता है कि सारे एलिमेंट तरीके से परफॉर्म करें। और अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो देखेंगे कि जो ग्रीन लाइट है इसका मतलब है कि उन्होंने एलिमेंट्स तरीके से परफॉर्म किया। अगर वो येलो हो जाता है दैट मीन्स इट्स अंडर रिव्यू। तो ये कई चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस और इंप्रेशन के साथ जाता है, ये सारे जुड़ के आपका एक स्कोर बनता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्टिस्टिक स्विमिंग राइट नाउ इन दिस 11th edition of the Asian Aquatics Championship 2025 at the Veer Savarkar Sports Complex. एब्सोल्युटली। और अर्जुन, जैसे कि आपने कहा कि मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आपने ये चीज़ बताई कि एक सिंगल परफॉर्मेंस है इनका एंड देन देयर इज़ अ डुएट मिक्सचर।
अब जैसे कि आपने कहा कि सिंगल आसान तो कुछ नहीं है ऑफ कोर्स, बट स्पेशली जब आप डू इट करते हैं ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हो जाता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड यस, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ कही कि यू नो दोस ग्रीन मार्किंग, कि आपके स्क्रीन पे आपके पॉइंट्स और एलिमेंट्स के बगल में जो ग्रीन मार्किंग आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने जो आपके जजेस को बताया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जजेस को पता हो कि दीज आर दी एलिमेंट्स आपने परफॉर्म किया है, और वो एलिमेंट्स के अगेंस्ट एक ग्रीन सिग्नल आता है, विच मीन्स आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अप टू द मार्क था। ऑफ कोर्स वंस अगेन वो ग्रीन सिग्नल, आई थिंक हर टीम सोचता होगा, और हर एक यहाँ पर पार्टिसिपेंट सोचता होगा कि हमें वो ग्रीन मार्क चाहिए, हमें वो ग्रीन मार्क के अगेंस्ट नहीं जाना है। मैंने डिसअपॉइंटमेंट्स तो देखे हैं यहाँ पर, जब वो जी। बैठते हैं यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट तो दिखता है, जब वो ग्रीन मार्किंग थोड़ा सा यहाँ वहाँ चले जाता है, बट ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिशन है, सब यहाँ पर compete करने आए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट वन हैज़ टू विन, राइट? जब प्रतियोगी अपनी एप्लीकेशन देते हैं, जब वो एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे वो एक डिक्लेयर्ड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी सबमिट करते हैं, बट जब वो परफॉर्म करते हैं वहाँ पे एक्चुअल डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है उसके बेसिस पे जो है स्कोर कंप्यूट किया जाता है। और जब हम स्कोर देखते हैं ये सारी चीज़ें जुड़ के आती हैं, इसलिए जो है कभी कभी जो प्रतियोगी होते हैं वो यहाँ सोफे पे बैठते हैं पीछे और वो स्कोर बोर्ड को देखते हैं, और फिर उनको समझ आता है कि जो उन्होंने डिक्लेयर किया है डिक्लेरेशन के अगेंस्ट एक्चुअल क्या है, तो तब उनको समझ आता है कि उनका स्कोर हाई है या लो है। और यहाँ पे कजाकिस्तान सबसे बढ़िया प्रतियोगिता रहा है, and that has been the top performer in artistic swimming. We'll be heading back to the commentary box for live coverage on Doordarshan Sports. We have Hari Kishore doing the English commentary and Vikas Pandey doing the Hindi commentary for artistic swimming, which will start very shortly from now, live on Doordarshan Sports. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जहां पर अब थोड़ी ही देर में शुरुआत होने जा रही है उस आर्टिस्टिक स्विमिंग इवेंट की, जिसका इंतजार हम आज सुबह के सत्र से कर रहे हैं। वाटर पोलो के इवेंट मॉर्निंग सेशन से लेकर इवनिंग सेशन तक चले, और अब देर शाम शुरुआत होने जा रही है उन 3 फाइनल्स की, जो थोड़ी देर में आपकी तरफ आ रहे हैं। और उसकी शुरुआत होगी पहले विमेन्स सोलो फ्री फाइनल के साथ। इस फाइनल के अंदर वो कई सारे नाम जिसका इंतजार 6 बजे निर्धारित समय है, और उसका इंतजार हमें रहेगा। उस टीम पर अगर नजर डालें कि कौन कौन सी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको नजर आएगा उसमें कई सारे बड़े नाम। 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। Veer Savarkar Aquatic Complex. We welcome you all for this evening events of the artistic swimming, which is women solo free, men solo free, and mixed duet, which will be held today in the evening for you all. It's going to be an amazing performance by our Asian athletes who are at par with any of the world champions performing at the world level. Please await. The events begin in a few minutes. Thank you. तो अगर सोलो इवेंट की अगर बात करें तो विमेन सोलो फ्री के अंदर वो 6 एलिमेंट्स जिसको पूरा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। सोलो फ्री इवेंट के अंदर आपको 2 मिनट 15 सेकंड का समय मिलता है, जिसके दौरान आपको 6 रिक्वायर्ड एलिमेंट्स पूरे करने होते हैं, और वो सभी 6 फ्री हाइब्रिड्स होते हैं, जिसमें एक को आपको डिक्लेयर करना होता है उस मुकाबले से पहले, उस अपने प्रदर्शन से पहले। ऑफिशियल्स और जूरी
इंतजार कर रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे। एक ऐसा ये इवेंट है जहां पर आपके एक्सप्रेशंस भी आपके अंकों का लेखा जोखा तैयार करने में बहुत अहम योगदान देते हैं। तो यकीनन जब वो स्विमर्स अपने एक्सप्रेशन से वो अंक बटोर सकते हैं तो जूरी भी क्यों नहीं प्रभावित कर सकते। और आज दर्शक दीर्घाओं में भी वो एथलीट्स, वो स्विमर्स नजर आएंगे जो अपनी टीमों के पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ग्यारहवें एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में आज एक और दिन आर्टिस्टिक स्विमिंग के नाम इस शाम में 3 फाइनल्स और तीनों फाइनल्स 6 बजे से इसका आगाज होने वाला है और 6 बजे वो पहला फाइनल आएगा विमेन सोलो फ्री के अंदर। Asian Aquatics and Swimming Federation of India and the local organizing committee welcoming you all for the 11th Asian Aquatic Championship 2025 held at Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, India. This year for the Asian Aquatic Championship for the artistic swimming, we are delighted to have over 60 swimmers representing 9 Asian federations. We welcome all of them to this year's championship. Ladies and gentlemen, there are 3 events for this evening session. The first event of this evening is event number 301, Women's Solo Free, and there is a total of 7 swimmers at this event. We welcome the technical officials to this event. We are happy to introduce the technical delegate, Mr. Steve Chiu. The referee for this session is Miss Alia Karimova. Assistant referee is Sama Yodris Mongol. The judges for elements are judge number 1, Tan B. Lan. Judge number 2, Debbie Juds. Judge number 3, Indira Lakshmi Pravesti. And judge number 4, Yumiko Otsuki. The judges for the artistic impressions are judge number 1, Mui Bai. Judge number 2, Hiroko Tanaka. Judge number 3, Rana Moshin. Judge number 4, Anna Neptosheva. The difficulty technical controllers are DTC 1, Christina Sadlak. DTC 2, Mivako Homa. And DTC 3, Yekaterina Nemik. The evaluator for this competition is Miss Marie Kavaklu. Ladies and gentlemen, we'll be starting the women's solo free. The first team is Singapore, represented by Tian. और ये रही वो लाइनअप विमेन सोलो फ्री के फाइनल के अंदर। रिचल रे जे जो कि पहली पार्टिसिपेंट होंगी उस सिंगापुर के रिप्रेजेंट कर रही हैं। डेक पर उनकी एंट्री और शुरुआत उनके साथ रिकल जिन्होंने वर्ल्ड एक्वाटिक्स आर्टिस्टिक स्विमिंग में हिस्सा लिया था पेरिस में इसी साल, और इससे पहले भी उन्होंने उस इवेंट के अंदर हिस्सा लिया। चलिए समय शुरू होता है। इस इवेंट के लिए समय जो निर्धारित किए गए हैं वो हैं समय 2 मिनट 15 सेकेंड, जिसके अंदर आपको 6 हाइब्रिड्स, फ्री हाइब्रिड्स परफॉर्म करने हैं। स्प्लिट
म्यूजिक की ताल पर वो डबल 360 डिग्री टर्न। स्प्लिट खूबसूरती के साथ अपने उस एलिमेंट्स को प्रस्तुत करती हुई like to introduce my album. तीन ग्रीन लाइट्स Hope. What's my definition of 6 success? फ्री हाइब्रिड में से 3 ग्रीन लाइट्स जल चुके हैं, यानी प्रभावित किया है अब तक अपने इस प्रदर्शन से। ये दृश्य अंडर वाटर कैमरा के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। What's my definition of success? Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. What a little bit of faith can do if you don't even believe in you. Why would you think or expect anybody else that's around you to? और बार वो रोटेशन आपको नजर आ रहा होगा कितनी कमाल की रोटेशन के साथ, और 5 लाइट्स ग्रीन, यानी कि अब तक प्रभावशाली रही हैं। और वो 2 मिनट 15 सेकंड का जो समय था वो अब समाप्त होता हुआ, और यकीनन तालियों की गड़गड़ाहट उनका स्वागत करती हुई उस प्रदर्शन का। अब नतीजा क्या रहता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब जजेस का जो पैनल है उसको इवैल्यूएट करेगा, उसका आकलन करेगा, उसके बाद आपको अंकों का लेखा जोखा मिलेगा। सिंगापुर की ये स्विमर, और अब एक बार उस हाईलाइट पर नजर डाल लेते हैं। रिचल रे, उनका ये प्रदर्शन किस तरीके से रहा। डाइव किया उस पूल के अंदर, उसके बाद से जो टर्न और ट्विस्ट के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन उस म्यूजिक के साथ देखने को मिला। रिचल, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि उन्होंने इस साल वर्ल्ड एक्वेटिक्स आर्टिस्टिक स्विमिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें पेरिस में उन्होंने हिस्सा लिया था। बुडापेस्ट में उन्होंने 2023 और 24 में बुडापेस्ट ओपन में स्वर्ण पदक भी जीता था। लेकिन इस प्रदर्शन पर अब सबकी निगाहें किस तरीके से वो पैलेट डबल लेग का प्रदर्शन किया, और अंकों का लेखा जोखा अब जब सामने आ रहा है तो बहुत हद तक तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन प्रभावशाली उनका ये प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन की बदौलत अब उनके पास इंतजार कि किस तरीके से इस 201.5639 अंक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो रखी थी उसी पर काम किया, और उसी को एक्चुअल डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को अपने प्रदर्शन से सही साबित करके दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रतियोगी श्रीलंका की बेरेलिया, डेक से एंट्री आमतौर पर जैसा जितने भी हमने अभी तक आर्टिस्टिक स्विमिंग में इवेंट्स देखे हैं उसमें वो पूल के अंदर से ही वो स्टार्टिंग पोजीशन। एक और बार वो एलिमेंट्स, फ्री हाइब्रिड एलिमेंट्स जो 6 हैं उसको किसने सफाई के साथ प्रस्तुत किया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। स्प्लिट 3 डिग्री, जो एक्चुअल डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है वो कितना उसको मैच कर पाती हैं ये देखना होगा।
अच्छे फुट मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान आप नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ एक बार फिर से वो देखिए शुरुआत अच्छी हुई है और प्रभावित करती नजर आ रही है पहले दृष्टिकोण में विमेन्स सोलो फ्री फाइनल के अंदर। और सबकी प्रस्तुति से आग, उसके बाद से वो वर्टिकल 360 डिग्री टर्न, आग की पोजीशन से वो टर्न और उसके बाद से अपने दोनों बाजुओं को फैलाते हुए अपने एक्सप्रेशन से प्रभावित करने की कोशिश श्रीलंका के स्विमर के द्वारा। एक और बार वो स्प्लिट वर्टिकल पोजीशन से कई सारे टर्न्स, 4 ग्रीन लाइट्स। बैक की पोजीशन, उसके बाद से वापस वो वर्टिकल मूव। 6 एलिमेंट्स आपको करने हैं, टोटल रिक्वायर्ड एलिमेंट जो हैं वो 6 हैं इसके अंदर, जिसमें से 6 के 6 फ्री हाइब्रिड्स हैं। और उसकी प्रस्तुति अभी हमने देखी किस तरीके से प्रभावित किया है जजेस को, ये देखना दिलचस्प होगा। 6 के 6 ग्रीन लाइट्स, यानी एक बार फिर से एक अच्छी प्रस्तुति, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नोज क्लिप आप देख सकते हैं, उसका सहारा लेते हैं स्विमर्स आर्टिस्टिक स्विमिंग में जब अपने वो प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हैं। एक और बार उस हाइलाइट्स पर नजर डालिए और एक खूबसूरत अंदाज में उस डेक के ऊपर से एंट्री पूल के अंदर, और उसके बाद से जब स्टार्टिंग पोजीशन से शुरुआत हुई उस 6 एलिमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से उस सिंगल लेग बैलेट की अगर बात करें या फिर वर्टिकल मूवमेंट उनकी तरफ से जो देखने को मिले, प्रभावशाली रहे हैं और कितना प्रभावित कर पाई हैं अपने इस प्रदर्शन से, वो अंकों के लेखा जोखा के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले दृष्टिकोण में तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें ठीक ठाक अंक मिलने चाहिए। 7 पार्टिसिपेंट्स हैं इस फाइनल के अंदर और 7 में से किसे आज पदकों की दौड़ में वो पोडियम पर जाने का मौका मिलेगा। इंतज़ार अब उस अंकों के लेखा जोखा के लिए। ये वो पल जिसे बयां करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि प्रदर्शन तो अपने आप ने जितना देना था दे दिया। अब नतीजे का इंतज़ार, रिजल्ट का इंतज़ार। जजेस अपने उस इवैल्यूएशन में, उस आकलन में लगे हुए। 156.8588 अंक, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो उन्होंने रखी थी उसको अचीव तो किया है, लेकिन फिर भी हैरान हैं। उनके चेहरे के वो हाव भाव बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है इस जो अंकों का लेखा जोखा उनके स्क्रीन के सामने है। सांत्वना उनके कोच के द्वारा और यकीनन अगली प्रतियोगी इस इवेंट में। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से अर्जुन चौधरी जी का। अर्जुन, एक बार फिर से आपका स्वागत। जीरू यांग एक और बार आपकी स्क्रीन पर, चीन की।
That was Yang Zero of the People's Republic of China doing the women's solo free, the third participant. And we saw the thrust in the spin as she comes off the diving pool. The swordfish as well with the straight leg in the vertical position. Fishtail, and finally the rocket split. That's a dive into the pool. The routine is between 2 minutes and 20 seconds and 2 minutes and 15 seconds for the women's solo. And look at how the limbs are flexible, dexterous as well, and the toes pointed. You can see the swordfish, that's the straight leg in the vertical position. And then the fishtail as well, the twist and spin. The degree of difficulty goes up with each of the elements. All 6 elements have been performed by the Chinese. Yang Zero. China yet to make the mark in artistic swimming, and Yang, their hopes rested on this youngster. Looking at the scoreboard right now, only 19 years old. वैसे चीन ने पेरिस में कमाल करके दिखाया था, 2 स्वर्ण पदक आर्टिस्टिक स्विमिंग में इन्होंने अपने नाम किया था। वहां पर पेरिस में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, उसमें फर्स्ट एवर टीम गोल्ड ओलंपिक में हासिल किया था पेरिस के अंदर। साथ ही साथ ड्यूट में भी एक गोल्ड आया था उनका, तो अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो चीन ने हाल के वर्षों में जो आर्टिस्टिक स्विमिंग है उसके स्तर में भी सुधार किया है और अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Yang with her 2 coaches waiting for the technical controllers, the 8 judges to compute the score. And you have the 6 elements, you have a degree of difficulty, declared degree of difficulty, and then the actual degree of difficulty. All of that is matched. We have video referral as well. We can see Yang on the screen, and these are the judges, technical controllers, just referring to the screen and to the coach card, which is where the routine and the theme is explained. We can see Christina as well, and pensive eyes, anxious as well. What is going to be the judge's score? That will determine her outcome here. Will she win a medal or not? All these thoughts go through your mind. Difficulty being 50, and the score 182.675. Yang Zero of China. और उस प्रदर्शन की वजह से वो पहुंच गई हैं दूसरे स्थान पर। लेकिन अब अगली पेशकश करीना, कजाकिस्तान की, इनको भी हमने पहले टेक्निकल इवेंट में देखा था और अब एक बार फिर से उनकी बारी है। और देखिए समर्थन भरपूर आएगा क्योंकि यहाँ कई सारे स्विमर्स हैं जो आए हैं अपनी इस टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो भारतीय प्रशंसक भी हैं जो इस अरीना में मौजूद हैं वो भी करीना का समर्थन करना चाहते हैं। और देखिए डेक के ऊपर से वो एक बार फिर से एंट्री हुई है। 2 मिनट 15 सेकेंड म्यूजिक के साथ समय की शुरुआत होगी और जिसकी शुरुआत होती है अब।
Bruscia la luna in cielo, io bruscio d'amore. Fuoco che si consuma come un lume corre. L'anima che piange, addolorata, non si dà pace, ma che mala nottata. Brucia la luna in cielo, io bruscio d'amore. Fuoco che si consuma come un lume corre. L'anima che piange, addolorata, non si dà pace, ma che mala nottata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia il lume cori, chi si ti d'acqua e da io si ti d'amore, acqua accanto. La canto le canzoni, se non c'è nudo casa faccia allo barcone, se non c'è nudo casa faccia allo barcone. What a beautiful performance, and the musical score reminded me of Godfather and a very famous Spanish singer as well, Julio Iglesias, as the Kazakh performer in the women's solo free. We can see the technical controllers also. That's a replay for you, Karina Magrupova. Kazakh has been the top performer here in the artistic swimming, Asian Aquatics. That's the twist, the thrust in fact, the continuous spin. Coming above water, Magrupova of Kazakhstan. Look at the artistic impression of this Kazakh performer. That's the bent knee. The rocket split. We've also seen the swordfish with a straight leg in the vertical position. And more importantly, the degree of difficulty of each of these elements is quite high, which is why it may compel the judges to award a high score, Vikas Pandey. Now with her coach. अच्छा अनुभव है उनके पास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 पदक उनके नाम है, लेकिन ज़्यादातर उनके पदक जो हैं वो टीम इवेंट्स में आए हैं। तो 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज आर्टिस्टिक स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में उनके नाम है और 2 ब्रॉन्ज उनके आर्टिस्टिक स्विमिंग वर्ल्ड कप में टीम इवेंट में, जहां टीम फ्री एंड टीम टेक्निकल इवेंट के अंदर आए हैं। अब फिलहाल इंतज़ार कर रही हैं वो बैठकर अपने कोच के साथ उस अंकों के लेखा जोखा के साथ ही साथ कजाकिस्तान की टीम में दर्शक दरगाहों में भी मौजूद हैं, जो उनके साथ ही उनके हम वतन आए हैं इस 11वें एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए। वो भी मनोबल बढ़ाने के लिए करीना के मौजूद हैं इस समय। लेकिन करीना की निगाहें इस समय उस डिजिटल स्कोरबोर्ड पर, कैसे आंका जाएगा उनके इस प्रदर्शन को। जजेस का पैनल व्यस्त और यहाँ चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ बता रहे हैं। जब तक नतीजा स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता तब तक बातचीत भी होनी मुश्किल है आपस में। और तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है, और अब देखिए चेहरे के भाव ये बता रहे हैं। अब पहले स्थान पे पहुंचा दिया है उनके इस नतीजे ने, 202.89 अंक हासिल किए और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को एक्चुअली अचीव नहीं किया, फिर भी
उन्होंने अपने उस प्रदर्शन से, उस एलिमेंट से फ्री हाइब्रिड्स जो 6 एलिमेंट्स प्रस्तुत किए, उसने वो प्रभावशाली रही और इस वजह से वो फिलहाल पहले स्थान पर हैं। अब चलिए अगली पार्टिसिपेंट, वो है फिलीपींस की टैन, उनका आगमन होता हुआ। जॉर्जिया फ्रांसिस्का टैन, फिलीपींस की। And that is Tan Georgia Francesca of the Philippines, finishing her routine of 2 minutes and 15 seconds. As she comes off the pool, the technical controllers have watched all 6 elements. The green light was given. We can see the supporters of Uzbekistan and Kazakhstan on the screen as well in the spectator stand. That's the replay for you as she enters the water, the artistic impression. And this is the fishtail, where the degree of difficulty is between 2.6 and 2.9. There's a twist and the turn, and look at how those feet are arched. That's the rocket split. Very difficult. You do it with a bent knee and her head above water. Look at how graceful she is. That's the thrust. The swordfish straight leg. It's all vertical position. But really, it's about the rocket split eventually. And how well she's able to do the hybrid, because it's a combination of all the elements. There's a coach right now on the sofa waiting for the score to be declared. Kazakhstan is right now the first rank, Karina Magrupova, and this is the support from the spectator stand. It's tense now because the 8 judges are computing the score on the basis of the degree of difficulty. केवल 17 साल की हैं जॉर्जिया फ्रांसिस्का और इस समय इंतज़ार कर रही हैं एज ग्रुप
टूर्नामेंट में हाल ही में उन्होंने कैलिफोर्निया में वो 2 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले थे और एक सिल्वर मेडल भी जीता था। सोलो में सिल्वर आया था और गोल्ड मेडल्स ड्यूएट और टीम इवेंट में आए थे। और इस समय वो इंतज़ार कर रही हैं अपने कोच के साथ। टेंशन है, टेंशन को मिटाने का एक अच्छा तरीका ये है कि हल्के फुल्के मोमेंट शेयर कीजिए, हंसते रहिए, और वही करने की कोशिश इस समय फिलहाल जहां जजेस का पैनल उस अंकों का लेखा जोखा तैयार करने में जुटा हुआ। इंतज़ार थोड़ा लंबा होता हुआ। इवैल्यूएशन करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपके इंप्रेशन से लेकर आपके जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी से लेकर सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा निराशाजनक नतीजा, 127.07 अंक। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी देखिए वो किस तरीके से डिक्रीज हुई है, जो डिक्लेयर की गई थी और एक्चुअल 31.85 एक्चुअल डिग्री ऑफ डिफिकल्टी नजर आ रही है। एलिमेंट्स और इंप्रेशन से उतना प्रभावित नहीं कर पाई, और देखिए इसलिए हताश अभी तक उस सोफे पे बैठी होंगी, लेकिन स्वीकार करेंगी इस नतीजे को, क्योंकि दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। That's very well said, Vikas Pandey, as the Filipino Tan Georgia Francesca comes off, and you can see the Kazakh team and Uzbek enjoying the moment on the camera. Next up is Sabina Makhmudova of Uzbekistan. You can hear the support from her in the spectator stand. They did very well on day 2, now day 3 here. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know how to control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I could do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Well, the cheer says it all for the Uzbek, Sabina Makhmudova, and you can hear her name being taken by supporters in the stand below us as she finishes her routine that lasted 2 minutes and 15 seconds. The Uzbek support team, they won the gold medal yesterday, and now
on camera, hoping for the best. That's a replay there of Makhmudova of Uzbekistan as she's about to enter the water. Artistic impression. And that is the thrust along with the artistic impression in the hybrid. Almost submerged. Three turns, 1080 degrees. Twist and turning in the water. Degree of difficulty going high. And now we can see the rocket split as well with the bent knee. Tremendous performance there. She's combined the swordfish, the fishtail, all together in a cocktail, and now awaiting the details of a performance 184, where the degree of difficulty is 42.6, which is slightly below the declared. 184 means that she's in the third rank right now. There is still one more performer before we know who is the gold, silver and the bronze medalist. एंटोनिया लूसिया अब आ रही हैं इस इवेंट के अंदर। ये आखिरी प्रतियोगी और इस आखिरी प्रतियोगी पर अब निगाहें होंगी कि किस तरीके से फिलीपींस की उम्मीदों का भार लेकर वो आगे बढ़ती हैं। I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light and made a switch. True, yes. And I fortunately know a little magic. It's a quality I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, the lonely and depressed. Poor unfortunate souls in pain, in need. This one longing to be thinner, that one wants to get the girl, and do I help them? Yes, indeed. Those poor unfortunate souls, so sad, so true. They come flocking to my cauldron, crying, "Spells, oh please," and I help them. Yes, I do. Now it's happened once or twice. Someone couldn't pay the price, and I'm afraid I had to rake 'em across the coals. Yes, I've had the odd complaint, but on the whole I've paid a say for those poor unfortunate souls. The men up there don't like a lot of blabber. They think a girl who gossips is a bore. Yes, on land it's much preferred for ladies not to say a word, and after all, dear, what is idle prattle for? Come on, you poor unfortunate souls! Go ahead, make your choice. I'm a very busy woman and I haven't got a day. It won't cost much, just your voice. You poor unfortunate soul. It's sad, but true. If you want to cross a bridge, my sweet, you've got to pay the toll. Take a gulp and take a breath and go ahead and sign the scroll. Float some jetsam, now we've got her, boys. The boss is on a roll. For this poor unfortunate soul. Well, all 6 elements have been performed. You can see the green light against the 6 hybrid elements. The Filipino performer, Antonia Lucia Rafael. Technical controllers, judges, all looking at the elements. 4 on elements, 4 on artistic impression. That's the Kazakh team. Kazakhstan, a strong performer here as well. And that's a dive replay of Rafael's performance so far. You can see the swordfish and the rocket split as well in the hybrid by Antonia of Philippines. Strong on the artistic impression.
but it's all about the degree of difficulty, and that is what the judges are looking at, the declared versus the actual degree of difficulty. Once again the swordfish, combining all the elements. We saw the fishtail as well, but not so much the spin or the continuity of the spin into turns, 2-3 turns. And yes, now we can see the thrust, the continuous spin of 1080 degrees, 360 degrees per turn as she rises from the water, and that's the artistic impression as well. 96.6213, a coach telling her that it's all right, there will be another day when you will lead. तो अब ये तय हो चुका है कि कजाकिस्तान की करीना ने स्वर्ण पदक जीत लिया है इस इवेंट के अंदर, और ये दूसरा स्वर्ण पदक होगा उनका। उन्होंने इससे पहले विमेन सोलो टेक्निकल फाइनल के अंदर भी पहला स्थान हासिल किया था, स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। तो इस तरीके से करीना मगरुपोवा कजाकिस्तान की वो बनी है आज एक बार फिर से चैंपियन विमेन सोलो फ्री इवेंट के अंदर। और अब मेंस सोलो फ्री इवेंट के अंदर आगाज होने जा रहा है। रेमा फुरुची जापान के, वो आ रहे हैं पहले पार्टिसिपेंट के तौर पे। याद रखिए मेंस इवेंट जो है वो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ पर 11वें एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में इसको शामिल किया गया है। और इस समय वो रेमा फरुची जापान के उस 5 प्रतियोगियों में से एक जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे, डेक पर एंट्री उनकी। You can hear the roar of the crowd. All 6 elements hybrid have been performed, and you can see the degree of difficulty as well. He started with a thrust spin, continuous spin as well,
360, 720, and then the 1080 degrees. And he did all the remaining elements as well. Have a look at the replay there. Look at the expression as he dives into the water. Rema Ferrucci of Japan, only 15 years old, a prodigy, and that's the thrust spinning, continuous. The toes arched, tremendous dexterity. And his submergence in the water, that's the rocket split. Artistic impression as well. And more importantly, the eyes. You can't forget the eyes of Ferrucci of Japan. That is the swordfish, then the fishtail as well. Beautiful expression. The male contestants are taking part right now in the men's solo free. And on the sofa, the smile is there on his feet. And I'm sure the Kazakh and the Uzbeks really love this performer. Rooting for the Japanese right now. Rema Ferrucci of Japan. सिर्फ 15 साल इनकी उम्र है और इस 15 साल में उन्होंने ऑलरेडी इसी इवेंट के अंदर, इसी आयोजन के अंदर एक कांस्य पदक जीत लिया है। मेंस सोलो जो इवेंट हुआ था टेक्निकल कैटेगरी के अंदर, वहां पर उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था और एक और बार वो मजबूती के साथ दावेदारी पेश करेंगे। इंतजार कर रहे हैं फिलहाल उस नतीजे का। और 191.0126 अंक, तो एक अच्छी शुरुआत इस इवेंट की। जो डिफिकल्टी रखी थी उन्होंने उसका अचीव किया है और स्कोर देख लीजिए, ये बता रहा है कि अच्छी शुरुआत हुई है इस इवेंट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया है और अब अगले पार्टिसिपेंट आर्थर मेदनोव जो कि कजाकिस्तान के हैं, उनकी अब परफॉर्मेंस आपके स्क्रीन पर आने वाली है। 20 साल इनकी उम्र और इस मेंस सोलो फ्री फाइनल के अंदर उस नोज क्लिप के साथ डेक पर इंतजार। Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Well, I'll have to admit that Artur Medinov has made a strong impression on me. Very athletic. This artistic swimmer from Kazakhstan, who have been dominating the artistic swimming here in the Asian Aquatics. We can see the technical controllers, judges. Men's solo free. Have a look at the replay. Streamlined body entering the water. And that's the thrust spin as well, continuous. Need a high level of fitness for this. The legs spinning and then submerging into the water. The swordfish can also be seen, the straight leg in the vertical position. But one got the impression that the degree of difficulty was quite low. And that's the artistic impression. The Japanese, Rema Furuchi, was much stronger on the impression side. But for sheer athleticism, I have to say that the Kazakh, Artur Medinov, has been very impressive. We saw the fishtail as well, and that's a rocket split. Emerging from the water, and that's the impression. Still enthusiastic, describing the routine of 2 minutes 15 seconds. The Kazakh team, we met them yesterday. Very young, with her coach now, Artur of Kazakhstan, and he is only 17 years old. We can see Christina in the judges' corner, waiting for the score. Very different personality as compared to the Japanese. Rema Furuchi, Artur of Kazakhstan on your screen right now. And that's a beauty of an international competition. Participants from different nationalities. The three judges along with Christina looking at the technical side. The elements. That's the manager of the Kazakh team. Who is more nervous here? They both look fearless right now. जब आपकी टीम लगातार अच्छे नतीजे दे रहे हो ना, तो फिर आप इतने नर्वस नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ से कुछ भी खो के नहीं जाने वाले हैं. पहले ही आपने बहुत कुछ हासिल किया है. और देखिए अभी फिलहाल जो स्क्रीन पर अंकों का लेखा जोखा है, उसके हिसाब से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. 174.0101 अंक, 44.65 डिक्लेयर थी, और जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी उन्होंने अचीव की 41.00. इवान मेदवेदेव उज्बेकिस्तान के अगले कंटेस्टेंट इस इवेंट के अंदर, और वो अब आएंगे आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले. जिस तरीके से हमने देखा वो प्रदर्शन, अब आर्तुर के बाद अब बारी है इवान मेदवेदेव की. डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो डिक्लेयर की है उन्होंने, वो है 29.80, और अब फिलहाल तीसरे पार्टिसिपेंट के तौर पर इस मेंस सोलो फ्री फाइनल में अपनी दावेदारी पेश करते हुए. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Let my people go. Whoop, whoop, whoop. Israel was in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, make old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down, Moses, let my people go.
And that's our swimmer number 3, Medvedev Iman from Uzbekistan. Well, that's the Uzbek Ivan Medvedev, and 17 years old. The announcer we can see along with the technical controllers, the judges, kissing his forearm, his muscles before he jumped in. And this is all part of artistic impression as well, waiting for the score to begin. He has an innocence on his face and plenty of support. The Uzbek number is quite high in the spectator stands. Very impressed by his muscular features, and that's the swordfish in that routine. The swordfish with a straight leg, vertical position, and the rocket split as well with the bent knee. Trying to show charisma. Still has a lot to learn. He was then a solo technical also on day one, this Uzbek performer, and he has plenty of fans here. They all have smiles, have enjoyed his performance. He had an oops moment in the pool as well, but he's recovered from that. And let's see what the score is. मेंस सोलो टेक्निकल फाइनल के अंदर ही आखिरी स्थान पर रहे थे, लेकिन अब देखिए फिलहाल वो तीसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं। उस टॉप 3 में नजर तो अभी तक तो आ रहे हैं, लेकिन अगले 2 प्रतियोगी हैं वो सुनिश्चित करेंगे उनकी स्थिति क्या होगी। 105.4214 अंक अपनी झोली में उन्होंने बटोरे हैं और वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठे इन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अब थाईलैंड के वेटिकॉन आ रहे हैं अगले प्रतियोगी के तौर पर। इस 5 फाइनलिस्ट में से ये चौथे फाइनलिस्ट। कुछ खास अंदाज में उस एंट्री और वेटिकॉन। Cousin Donkey, y'all. She's in superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go! She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Outside, inside out, living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are very red, and her skin's the color of mocha. She will wear you out. Living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. Hey, donkey, that's Spanish. Woke up in New York City in a funky cheap motel. She took my heart, she took my money. She must slip me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. And once you've had a taste of her, you'll never be the same. Yeah, she'll make you go insane. Outside, inside out, living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are very red, and her skin's the color of mocha. She will wear you out, living la vida loca.
Well, each contestant brings a personality to the solo free performance in men. So you can see the two coaches, brothers and sisters, representing Thailand, and they have infused a special culture into their participation. Technical controllers we saw earlier, and this is the Thai performer, Vatikon, jumping into the pool. Very different. That's the rocket split as well. Quite unique in his physical structure as well. But it's all about the performance in the water. We saw from the earlier Uzbek performer, he got more in terms of his artistic impression and less for the elements. Let's see what the judges rule for the Thai, Vatikon. All smile, but has been the most expressive so far. Will that translate into an artistic impression score or not is very important. Because you have 4 judges who are looking at elements and 4 at artistic impression. Here also, Vikas Pandey, you can see that the artistic impression score is higher than the score for elements. फिलहाल 132.2613 अंक के साथ वो तीसरे पायदान पर अपने आप को देख रहे हैं और यकीनन जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी उन्होंने रखी थी उसको अचीव किया है और एलिमेंट्स के जरिए उतने अंक तो नहीं मिले लेकिन इंप्रेशन के जरिए जरूर उसमें कामयाबी मिली है और जो वो डेक के ऊपर भी हमने देखा कि किस तरीके से अपने उस खास अंदाज से वो पेशकश की उसकी वजह से उनको वो अच्छे अंक मिले। फिलहाल कांस्य पदक की पोजीशन पे हैं लेकिन एक और प्रतियोगी आज की शाम आने बाकी हैं और वो हैं विक्टर द्रुजिन। जी हाँ, विक्टर द्रुजिन, इनके नाम पहले ही एक स्वर्ण पदक है। मेंस सोलो इवेंट के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और एक बार फिर से कजाकिस्तान की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस आखिरी कंटेस्टेंट के तौर पर मेन सोलो फ्री के फाइनल में। Well, that's the second Kazakh participant in the men's solo free. Viktor Druzin of Kazakhstan on your screen. Once again, different participant.
And the technical controllers are looking at both the 6 elements performed and the artistic impression along with the degree of difficulty. Look at how well submerged he is. Very athletic and strong in the water. That's the artistic impression, and that's the thrust with the continuous spin as well. Spinning both sides. One turn to the right, one turn to the left. And that's a fishtail as well. And that's a swordfish. That's split just over water with the head and the torso underwater, submerged. Very athletic, but more importantly, Vikas Pandey, what you will see is the way he rises from the water. That's been quite different as well. That shows strength and balance. All that resistance in the water and minimal ripples as well. Number 1, 198.7639. तीसरा स्वर्ण पदक विक्टर के नाम एक और स्वर्ण पदक जीतेगा और विक्टर द्रुजिन, इन्होंने इससे पहले वो 2 स्वर्ण पदक जो डाले थे, इससे पहले टीम टेक्निकल फाइनल और मेंस सोलो टेक्निकल फाइनल के अंदर आए थे, और अब जब मेंस सोलो फ्री का इवेंट हुआ तो यहाँ पर भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान को एक और स्वर्ण पदक 198.7639 अंक के साथ। वहीं रीमा फरूची जापान के, उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे, आखिरी कंटेस्टेंट तक वो पहले स्थान पर बने रहे, लेकिन विक्टर का वो प्रदर्शन उन्हें बना के गया है चैंपियन एक और बार। Tremendous performance by Kazakhstan again, winning the gold and the bronze medal here, and Victor Druzin with 198.76 points. The bulk of the points coming in the elements and then the artistic impression. It's all about the DD, degree of difficulty. Gold going to Kazakhstan, the silver going to Japan, Rema Faruchi, and the bronze medal going to Artur Maidanov of Kazakhstan, winning the bronze medal. Kazakhstan dominating day 3 of artistic swimming as well, here in day 7 of the Asian Aquatics Championship 2025, live on Doordarshan Sports. These are the highlights. We can see the women's solo right now with the Filipina Antonia Lucia Rafael performing. And that is the Sri Lankan Vijayasena performing right now in these highlights in the women's solo free.
तो 2 फाइनल्स तो अब तक हो चुके हैं, एक और फाइनल आज के शाम को होना बाकी है, मिक्स्ड ड्यूट फ्री फाइनल। बस आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 45 मिनट बाद अब से, यानी करीब 8 बजे के आसपास हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर से।
fantastic impressions, ladies and gentlemen. Judge number 1, Hiroko Tanaka. Judge number 2, Rana Moshin. Judge number 3, Mui Bai. Judge number 4, Anna Nepota Cheva. The difficulty technical controllers are DTC1, Ali Pratt. DTC2, Monica Snezniak. And DTC3, Anastasia Rizmetova. The synchronization technical controllers. Judge number 1, Christina Sedlak. Judge number 2, Miwako Homer. Judge number 3, Yata Karina Nemish. The evaluator for this competition is Ms. Marie Kavakloglu. All right, ladies and gentlemen, now get ready for our final event, mixed duet free. And our pair number 1, let's welcome Thailand. चलिए तो आज के शाम की ये आखिरी फाइनल आपके तरफ आ रहा है, जहां पे मिक्स ड्यूएट फ्री फाइनल में अब थाईलैंड की ये जोड़ी आपकी स्क्रीन पर अपने प्रदर्शन के साथ उस 2 मिनट 45 सेकंड का वो पहला परफॉर्मेंस इस फाइनल के अंदर उन टीमों में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। थाईलैंड एक बार फिर से आपके सामने, कैंटीनर सुपिचाया इनकी ये जोड़ी अब तैयार है उस पूल में एंट्री के लिए। डेक के ऊपर स्टार्टिंग पोजीशन आमतौर पे हमने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है इस 2 मिनट 45 सेकंड के इस इवेंट की। Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on.
एक शानदार प्रस्तुति और उसका समापन होता हुआ। 7 एलिमेंट्स आपको करने थे और उसमें से आपके 4 हाइब्रिड एलिमेंट्स थे, जबकि 3 पेयर एक्रोबैटिक, और उससे कितना प्रभावित कर रहे हैं। एक एक्रो पेयर जो है वो रिव्यू के लिए गया है, तो देखना होगा कि कितना प्रभावित किया गया है। हरि किशोर मलाड़ी हमारे साथ बने हुए हैं। हरि किशोर, जिस तरीके से वो फ्लिप आया था, बैक फ्लिप जब थ्रो किया गया था, तो ऐसा लगा शायद थोड़ी सी वो तालमेल में कमी दिखी थी, और मुझे लगता है उसके अंक डिडक्ट हो सकते हैं शायद, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये हाईलाइट देख लीजिए एक बार। Thank you, Vikas Pandey. There you see the Thailand pair from the stage and just getting into the pool. As they get into the pool, there you see that somersault, that back flip out there from the surface of the water, and then the twists and the turns with that arc shaped, with that ballet double leg as well that is included. They did the vertical leg movement along with that split as well, and there you see another flip there from the Thailand pair. And you have to watch the synchronization, the artistic element that is very important in this sport here, because there is a theme music, there is artistic element, there are expressions that need to be there on your face, on your body language as well. There is that beautiful rocket flip and that twist and turn as well with that single leg raise, and that's how they end that performance. And there they get a score of 257.6872. Their declared degree of difficulty and their actual degree of difficulty is the same, 39.00, and the artistic impressions are also good with 142.900, and all the elements that they get are 114.7872. There, the Thailand pair have finished their performance, and their coaches are happy as well. We're all set for our next pair, which is the pair from Uzbekistan. It is Vyacheslav and Anna, with Eva Guseva being the reserve, but it will be Vyacheslav and Anna who will commence their performance now. Starting their performance from the dais there. Couple of turns, and they will go ahead and dive into the pool with Anna getting in first and Vyacheslav following, and let's enjoy their performance. And now, the 6 merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of The Cell Block Tango. Якое гірешлоком леко к тому ферімі, і не глече к тому феє, де неме гос, і нартот лом войок. Не тудом, мерт моя анкл сам хок інтан там, проболтом,
Rendesen meg marazni. Ti namertatek meg. Yeah, but did you do it? Not guilty. Dirty bomb, bomb, bomb. Well, ladies and gentlemen, that was उस 8 जो एलिमेंट्स थे उसमें से 2 रिव्यू के लिए जाएंगे, लेकिन उत्साहवर्धन तो भरपूर हो रहा है इस उज्बेक जोड़ी का, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन आया है अब इंतजार रहेगा उन अंकों के लेखा जोखा का कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को आंका जाता है। देखिए किस तरीके से अगर हाइलाइट्स पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा एक अच्छे तालमेल के साथ शुरुआत हुई उस डेक के साथ, और उसके बाद से ये स्प्लिट और उसके बाद से एक और ये स्प्लिट के जरिए कुछ अच्छे मूव्स दिखाने की कोशिश, फिर नी बैंड आर्क की पोजीशन, और वहां पर देखिए कितनी अच्छी तालमेल ये यहाँ पर फ्लिप भी देखिए कितना बढ़िया तो किया, और उसके जरिए वो यकीनन प्रभावित करने में कामयाब रहे होंगे। एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिला हरी, इसमें कोई शक नहीं है। Absolutely, synchronization was very good. The artistic element and the acrobatic skills that were displayed have also been very good. There you see that knee bend and the way they did those twists and turns under the water with that split out there. It's been exquisite to watch, and one flip again, both of them doing with that, both the knees raised. It's been really a treat to watch for everybody out there. The artistic element that really involves in this has been really good, and especially you need a lot of endurance levels, you need a lot of that mental toughness to perform these kind of moves. There you see those twists and those turns that happen inside. You must remember that they will not go and touch the base of that pool, so they're floating in the water while they're doing these moves out there. There the Uzbekistan pair on the seating area on the dais. Uzbekistan fans and their compatriots are really excited. The coaches are waiting for the results to be declared. The judges are taking their time, the referees. They will evaluate them on 4 hybrid points and 3 pair acrobatic moves, that the routines that they would perform. Serious discussion among these judges there. There are technical judges, there are acrobatic judges, there are judges who will judge on the synchronization part of it. Fans having a good time as well. ऐसा लग रहा है जो समय लग रहा है ना, उसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स जो हैं उनको रिव्यू के लिए भेजा गया है 8 में से, इसलिए उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है उन एलिमेंट्स को कि क्या उसमें किसी तरीके की खामी या उसको सही तरीके से पूरा किया है कि नहीं। इंतज़ार बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर समर्थक अच्छी खासी संख्या में, चाहे कजाकिस्तान की बात करें या उज्बेकिस्तान की, अच्छी खासी संख्या में जो एथलीट्स आए हैं, जो स्विमर्स आए हैं, वो उत्साहवर्धन लगातार करते रहे हैं। और जब ये मिक्स ड्यूएट फ्री फाइनल हो रहा है तो यहाँ पर भी अब सबकी निगाहें उस डिजिटल स्कोरबोर्ड पर और उस बड़ी सी स्क्रीन पर। क्या नतीजा आएगा, क्या 257.68 अंकों से बेहतर होगा ये प्रदर्शन, इसका इंतजार। ये वो पल जो किसी भी एथलीट के लिए निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये वो पल होता है जहां पे आपको कुछ नहीं पता होता है। आपने प्रदर्शन करना था, आपने कर लिया, अब आपको इंतज़ार करना है उस नतीजे का। और जैसे जैसे वो समय की सुई आगे बढ़ती है, आपकी धड़कनें तेज होती चली जाती है। Very well said, Vikas. The most difficult period for an athlete is waiting for the results. The Uzbekistan pair of Anna and Vyacheslev
along with their coaches in the seating area there. They're looking tensed. They know they've done their best. And in fact, because the more time the judges take, the more your heartbeat raises, you know, because, you know, you're in doubt. Somewhere, you know that, okay, what are the judges thinking? Why are they taking so long? A lot of questions that flash through your mind. You start reviewing your own performance. You start thinking of what might have gone wrong. So a lot of things that go through an athlete's mind. The spectators, the fans, the fellow swimmers and the divers are all very eagerly waiting, along with our commentators as well. There, the athletes out there. They're waiting, and there it is. That's the score that they've all been waiting for. 189.5400 is the score. The declared degree of difficulty is 27.4000, while the actual is a little less, 15.2500, and their artistic impression has been recorded as 132.2000, while their elements 57.3400. And as of now, with just these two performances that have happened, they are in the second place. So we're out for the third pair there. Kazakhstan's Yasmina and Aldia will make their way into the dais. एंट्री उस डक के ऊपर और कुछ खास अंदाज में ये जोड़ी इस समय कजाकिस्तान की, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है आर्टिस्टिक स्विमिंग में कजाकिस्तान की टीम का। आज भी वो कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन क्या आज इस इवेंट के अंदर ये जोड़ी कुछ वैसे ही प्रदर्शन की पुनरावृत्ति कर पाएगी? देखना दिलचस्प होगा। म्यूजिक का इंतजार।
Well, the third element is still under review out of the 7 elements which are in show here in this mixed duet free event. Kazakhstan's Yasmina Islamova and Edyar Ramazanov in the diving pool area. The technical controllers, announcer in the background as well. You have 2 sets of judges, 4 each. 4 would be checking the elements and 4 on the artistic impression. That's the replay there. Quite a few elements under review. That's interesting as well. Diving into the pool, that's the replay. And that's the airborne acrobat. Synchro error has to be minimal. Synchronization, and that is the fishtail. That's the thrust, the continuous spin. And you can see the bent knee as well. Airborne off the water. Quite a unique duet here from Kazakhstan. They set the standard when it comes to artistic swimming. That is the artistic impression off water. And with both the coaches there on the sofa looking at the score, what are the judges thinking? You can see Monica and Ellie, part of the technical side, the elements which are being adjudicated, scored. Again, each element has a degree of difficulty. All of that adds up. And you have the declared DD and what's actually executed. We can see Thailand, they made a strong impression today, and all days of artistic swimming with the performance so far. But Kazakhstan has been dominating the team events. Today has been the solo for women, men, and now the mixed duet free. Tension is palpable. Look at the makeup, all that preparation that goes. It's waterproofed before the event, which is why there is always a break. Preparing yourself. And these are the spectators. We can see some spectators who are always a favorite with the camera. And hello to you as well from Doordarshan Sports. They have video referrals, so they're checking if each element has been performed according to the declared degree of difficulty. And then you have the actual. Kazakhstan clearly dominating. If you look at their medal haul today itself, in the men's solo, they won the gold and the bronze, which is very impressive, dominating day 1 and 2. On day 1, they picked up all 3 golds. Technical controllers, we can see Kazakh's Yasmina on our screen right now. Only 16 years old, and Edyar. Well, they're in second place right now with a score of 203.1346, adding the elements 65.48 and the artistic impression, which is 137.65. They have been very expressive, and that score is heavily weighed on their impression. So in top place is the Thai pair of Kantinan and Supichaya. Ladies and gentlemen, welcome to the fourth team from People's Republic of China. Next up is the mixed duet free pair from China, PRC, People's Republic of China, Wang and Yang.
to escape, my dear. You've been naughty, I know, by trying to steal something of my own. I have no idea why I have been dragged down here. Don't lie. Know what you're talking about. I'm sure there's no reason to shout. I saw the kid and tried to steal. Now I know why you're here. You are a mischievous thief. But if you want the key, you need to earn it, my dear. This is how we treat our guests who are trying to cheat. So you will be my rental tonight, at the Dragon's Ball. Take my oath, surrender, surrender. Give me the way I ask for forgiveness, kindness, and care. Take my oath, surrender, surrender. You will die another day, another way. I think we're done now. You think so? I have to go. You're not going anywhere. Surrender, surrender. Give me the way. Ask for forgiveness, kindness, and help. Take my hand. Surrender, surrender. We will die another day, another way. Another day, another day, another way, another way, another day, That was a very good performance from the People's Republic of China there. All the 7 elements getting a green light from the technical judges as well. There the pair of Kaiji Wang and Suri Yang slowly making their way out from the pool, and there you see that's how they started, straight on the dais. Look at those nose flips there. Then the dive into the pool, and once they did the dive into the pool, started their artistic performance, and there that is that fishtail, that movement that they've done, the bent knee and the joint leg movement, this time with that single leg, and then they make it 2 legs out there. And the hand movements as well. The back flip there from the surface of the water, and this is that sport fish movement that they have done along with the fishtail movement. They also had a couple of thrusts in there, where one spin is that equal to 360 degrees, and 2 spins 720 degrees, 3 spins 1080 degrees, and a lot more. And the theme that they had chosen, the metal genre, Dance with the Dragon by Jark Sara. So there they are in the seating area, awaiting the judges' decision there. The technical observers taking their time. Time and again we've spoken about how difficult this artistic swimming can get. The crowd favorites, the cameraman favorites there in the crowd. Yes, don't worry, we will get good marks there, is what she seems to be saying. Tension among everybody there. Compatriots of the performers. They're all waiting, and there it is. The
move into the second position. Both Kaiji and Suri are happy with that result. Emotional as well on there. They get their score of 242.4933. And look at the declared degree of difficulty and the actual degree of difficulty is the same there, which means their performance has been up to the mark. And there the artistic impression 128.5000 and the elements of 113. And we're all set for our last pair of this evening. It is the Kazakhstan's pair of Nargiza and Victor. थोड़ी देर पहले विक्टर उस मेन सोलो इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीत के गए और ओवरऑल उनका तीसरा स्वर्ण पदक था। और देखिए कुछ मिनट बाद ही वापस वो लौट रहे हैं इस इवेंट के अंदर, जब अब मिक्स्ड ड्यूएट फ्री इवेंट के उस फाइनल में शिरकत करने जा रहे हैं। एक बार फिर से उनसे उम्मीदें और उनका साथ देने के लिए हैं इस बार नरगिजा। ये जोड़ी 2 मिनट 45 सेकेंड, इसके अंदर आपको वो 7 एलिमेंट्स पूरे करने हैं, जिसमें से 4 फ्री हाइब्रिड और 3 पेयर एक्रोबैटिक। पूल में एंट्री और कुछ ऐसे अंदाज में अक्सर हमने देखा जितने भी कजाक स्विमर्स रहे हैं उन्हें अपनी प्रस्तुति स्टार्ट किया। Performance from the Kazakhstan pair of Nargiza Bolotova and Victor Druzin. They slowly make their way out from the pool and they've got all 7 greens, in fact 6 greens, and 1 acrobatic pair is under review. Acrobatic pair element is under review there. They're just slowly making their way out from the pool. There's a lot that the technical judges and the artistic judges would be looking at. Have a tough work to do there on the dais.
That's how they started their performance. Get under the pool, the dive into the pool, in fact, and then the backflip there, the acrobatic flip that has happened. And this is that thrust that they do. They go ahead and spin under the water there. That one turn symbolizing 360 degrees, two with 720 degrees. And then the hand movements as well. Look at the facial expressions that also match with the kind of routines that they do, which is very important in artistic swimming. There is that small flip out there from the surface of the water. And that like the fishtail movement that done along with that clasping of the hands. And we've seen a lot of that happening in there. Did a medley of the Bandex music before moving on to other songs as well. They slowly make their way out of the pool. They've taken their time out, the Kazakhstan pair. They don't have their coaches. They know they've done their best. The coaches also know that they've done their best. Do these judges believe that they've done their best out there? Fans capturing those moments that would be with them for a very long time. They've come in huge numbers to support the sport, to make this a very grand success here. This is the 11th Asian Aquatics Championships. This is happening in India for the first time. The judges are slowly taking their time, and 4 judges looking at the technical part of it, 4 judges rating the participants on the artistic elements of the routines. The artistic impression has always to be very high there. And they also look at the declared and the actual DD. They have finished 3rd here, and that is what the scoreboard says. They've got 241.4613 points, and look at that declared degree of difficulty, 44.6250, and the actual is 33.9000, which is a little less than what the actual declared difficulty is. The artistic impression, 148.3000, and the elements that they've performed are 93.1613 points for whatever they've performed. And there they are the results on your screen. The Thailand pair getting the gold on the top spot there, with the Chinese pair in 2nd, and the Kazakhstan pair of Victor and Nargiza finishing 3rd, with their compatriots Yasmina and Aldiar 4th, while the pair of Vyacheslav Rodnev and Anna Vaschenko of Uzbekistan finishing 5th out there.
There we've just watched a lovely performance from the artistic swimming here, and we will now go ahead and witness the medal ceremonies of the events that have culminated today. We did the women's solo free, and then it was the men's solo, and then finally the mixed duet free there, with amazing performances from all these artists here in this artistic swimming that we have seen. There were a lot of elements that were involved in it. There was thrust, there was a sport fish elements, there was a fishtail, there were rocket splits. They did those twists and turns. The artistic impressions were very good, and each and every performer came out there to outperform the others, and that is what artistic swimming is all about. We did look at how well their expressions were in sync with the routines that they were performing, and that is the panoramic view of the diving pool where the artistic swimming routines have taken place. And we are here up to the medal ceremony of these three events that have just completed today. Kazakhstan, Thailand did well. The pair from Kazakhstan did well. The pairs from China did well. We've got Singapore doing well. People's Republic of China, they've been forced to reckon with in the pool. They have done really well. This is all a case study for how India can go ahead and learn from the best of the best in the world and replicate those performances. We've got a very long way to go, especially when it comes to events in artistic swimming, maybe even water polo that we saw in the morning. And we did see how India can go ahead and improve. Sri Viren Nanavati is the first Vice President for the women's solo event. The first event of the evening that concluded. The medal winners, the gold, silver and the bronze. Ladies and gentlemen, we present you the bronze medal winner of the women's solo free from Uzbekistan, Sabina Makhmudova. The bronze medal winner of Uzbekistan there, Sabina Makhmudova. And she is the bronze. Ladies and gentlemen, the winner of the silver medal, Rachel Ray Tian from Singapore.
hands together for the winner of the gold medal and the Asian champion for 2025, representing Kazakhstan, Karina Magrupova. Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the national anthem of Kazakhstan. Thank you, ladies and gentlemen, and congratulations to our winners. And we would like to thank our dignitaries for presenting these medals. Ceremony in a short while from now.
set for the men's solo free victory ceremony here. Just finished the women's solo free where Kazakhstan won that gold medal. And the men's solo free victory ceremony that will commence in a very short while from now. We're all set to begin our next victory ceremony It is again for the event, Kazakhstan men's on solo top free. with Japan and Kazakhstan For again presenting winning the medals, bronze medal we there. request Miss Myra Go, competition manager, and Sri Rajkumar, Vice President, Swimming Federation of India, to kindly do the honors for the medalist men's solo free. Ladies and gentlemen, the bronze medal winner in the men's solo free, representing Kazakhstan, representing Thailand, Watikon Kedirankarok. Winning the silver medal is from Japan, Furuchi Rima. Ladies and gentlemen, please honor the winner of the gold medal and the Asian champion for 2025 from Kazakhstan, Victor Druzin. Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the national anthem of Kazakhstan.
Thank you, ladies and gentlemen, and we congratulate our winners and thank the delegates. That was the victory ceremony of the men's solo free that we had just seen, where it was Druzin Victor of Kazakhstan, Furuchi Rema of Japan, and Katiran Kanok of Thailand winning the gold, silver, and the bronze medal respectively. Moving on, we're going to the mixed duet free victory ceremony, and that's Jalveer, the mascot of this 11th Asian Aquatics Championship 2025, having a whale of a time there, and I'm sure all of us have also joined Jalveer in Ladies and sharing gentlemen, all our set emotions. for the final presentation of today's evening program, the victory ceremony for the team free event. For presenting these medals, we would like to call Sri Rushi Pandya, Sri Anil Vyas, and Sri Ramanuj Mukhopadhyay. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the bronze medal winners of the team free event, Team Kazakhstan. And ladies and gentlemen, the winner of the silver medal, People's Republic of China.
gentlemen, please put your hands together for the winner of the gold medal and the Asian champions for 2025 in Team Free, Team Thailand. Team Thailand, ladies and gentlemen, winner of the gold medal. Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the national anthem of Thailand. Thank you, ladies and gentlemen. Congratulations to our winners. And we would like to thank our dignitaries for presenting the medals. That comes the end of this evening program, ladies and gentlemen. We see you tomorrow morning at 8 a.m. for the water polo and 6 p.m. for artistic swimming final session. Thank you.
victory ceremony with Thailand winning the gold medal, People's Republic of China winning the silver, and Kazakhstan winning the bronze medal out there. And what a day of artistic swimming. The last day of artistic swimming, and then we've got water polo as well for the next 4 or 5 days to go on. There is action that is guaranteed every minute out here at the 11th Asian Aquatics Championship 2025 that is happening here at the Veer Savarkar Sports Complex in Ahmedabad. Started with swimming and diving. We moved on to water polo and artistic swimming, with swimming, diving and artistic swimming almost come over. And now we've got our anchors on the pool side with an interview. Of Asian Aquatic Championships 2025, and here we are with our gold winners, Team Thailand. The coaches, you can clearly see a big smile on their face. In fact, I tried doing an interview yesterday with them, but they were so exhausted. They were running around and they were in that entire panic. But I think that was worth, because today we see that smile on your face. And how does it feel? First of all, congratulations to the entire team. So starting with the coach, actually, because I tried getting her interview, but I could see that, that panic yesterday. But today you're relieved and you feel so proud about your team. Very proud of all the team, very proud of these three, then play the mixed duet. Sorry, yesterday we have the next event in program, so both of three have to play again. So we are a little bit in a rush with the schedule, but we are very proud of all three of them because two of them played the tech yesterday and the other two played the free today, so we're training all together. And I really think that it's so important for the coach to be there and put in the kind of effort, because, the way you all have been with your team shows that how important the role of in a team, but usually you have another partner, and this one was usually the woman duet. So we mix all three together, and we start from October 2024. Now it's only 1 year, and we start to prepare for this year, Championship, World Championship, World Cup. And so step by step, we try to improve. Wow, that's amazing. So that's what we know, that, the degree, you all played it very smart, that the degree of difficulty was kept very normal, but according to their comfort is what you all actually chose. So that's fantastic input. Thank you so much, team, and all the best for tomorrow. We're looking forward for yet another fantastic performance. All the best. Thank you. Kapan ka. Kapan ka. Okay. So moving forward, we've come to an end of a day, but we have Arjun here with me. Arjun, welcome back. Has been a pretty hectic day for you, yeah? For you as well, and I must say that the interview with Thailand went off well. They put in a lot of effort. They won the gold medal in the mixed duet, and that's quite credible. They won the bronze medal in the men's solo event as well, free. And Thailand has been challenging Kazakhstan. And that's a very big ask when you look at artistic swimming, because Kazakhstan dominated. They won the gold medal in the men's solo free and the women's solo free as well. And for Thailand to win the gold medal in the mixed duet, I think is a great achievement. They have been putting it up there, winning the silver and the bronze medal. Kazakhstan, of course, has been winning the gold medal from day one. All three events. They won the gold medal yesterday in the team event as well. And they won the gold medal today in the women's solo and the men's solo. So that has been the result as far as artistic swimming is concerned here at the Veer Savarkar Sports Complex. It's been exciting. Tomorrow would be the final day for artistic swimming. But let's not forget that water polo will continue till the 11th of October. So it will be back or more on Doordarshan Sports from tomorrow in the morning, 8 p.m., 8 a.m. sharp. Watch out for the water polo that will begin. Absolutely. Thank you so much, and we'll see you all tomorrow sharp at 8 a.m.